or similarly we will see time dilation be opposite. Let's say we have two frames. And let's assume that we have something of length L prime in this frame. So if this thing is stationary in this frame, then this thing has a proper length. L prime is proper, which means that you can measure these two endpoints at the same time. अगर ये time का भी आप करें, so then these two things are happening at the same time. So ये जो length है, this is proper length. तो जो proper length है एक frame में, दूसरे frame में it will appear as contracted. So L is L prime. So this is proper length and this is improper length. So जो proper length है और proper length वो length है जो एक frame के अंदर stationary object की है. इसका prime से उससे कोई तल्लुक नहीं. अगर ये proper length होगी, फर्ज करें कि कोई और object है इस frame में stationary है, then L prime would be, in this case L is proper. तो जो proper length है वो दूसरे frame के अंदर contracted नजर आता है. क्यों? क्योंकि दूसरे फ्रेम के अंदर लेंथ आप लेंथ की डेफिनेशन से मेजर नहीं कर सकते कि both things happening at the same time. And the length that appears to the other observer is contracted. So जिस फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ, अगर फर्स्ट करें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट दो इवेंट्स के दरमियान आपने लेंथ मेजर करें, देन प्रॉपर लेंथ उस फ्रेम में होगी जिसमें दोनों इवेंट सेम टाइम पे होते हैं. तो उस लेंथ को आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट द लेंथ ऑफ द फ्रेम. फॉलो कर रहे हैं? तो जो प्रॉपर लेंथ है एक फ्रेम में वो दूसरे फ्रेम में कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर होती है क्योंकि अदर फ्रेम के अंदर इट्स एन एपरेंट लेंथ, इट्स नॉट प्रॉपर लेंथ, इट्स इम्प्रॉपर. तो फर्ज करें इस फ्रेम के अंदर आपके पास एक वायर है जो मूव कर रही है, लेट मी नो टेक दिस टू बी y कोऑर्डिनेट, और जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा सम q ओवर लेट्स से दिस डेल्टा x. नाउ since this wire is stationary in this frame, this charge density, so इसके अंदर जो लेंथ है, let's say this delta x, this delta x would be delta x prime. Here is going to be kappa is 1 over this. So this is the, क्योंकि इसमें delta x prime proper है और delta x improper है. ठीक है? By the way, और इसके अंदर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? Since delta q जो है it's the same as in this frame as in this frame, so lambda is now delta q over delta x and delta x is delta x prime over kappa ऊपर चला गया. So this is lambda prime. This is the true transformation from lambda prime to lambda. नाम में से काफी सारे लोगों ने ये kappa इधर लगा, और इसको by the way you can find it using the conversion of charge as well. You come up to the same thing. Since it is the charge that is conserved from this to this frame, so it means that lambda prime delta x prime in this frame must be equal to lambda delta x in this frame because it's the same charge is invariant, and you can define delta x as
delta x is improper length here, it's proper here, so delta x is delta x prime over kappa. So which means that delta is kappa. लेकिन जिस मोड से भी आए, जो इम्पोर्टेंट चीज है इसको इससे रिप्लेस करें. Similarly, टाइम का है. Time is the time interval between two events if they happen to be at the same spatial coordinate. उसके लिए आप इसको टाइम स्केल में करें. यानी कि इस फ्रेम के अंदर ये इवेंट है, यहाँ पे कोई इवेंट है, दूसरा इवेंट भी इधर ही हो, इसी पॉइंट पे स्पेशल कोऑर्डिनेट सेम है, सिर्फ टाइम चेंज हुआ, then it is proper time interval. So in the other frame जिसका हमने डेरिवेट भी किया था, वो डेरिवेशन दोबारा से देखिए, उसमें ये चीज incorporated थी already. See in the other frame, then let's say delta t is the proper time, then the improper time in the other frame was this. So which is greater than delta t because kappa is 1 over 1 minus 2. So it's the improper, it's the proper time which is being multiplied by kappa to get this thing. So this is not the proper time, this is the proper time. जिस फ्रेम के अंदर दो इवेंट सेम स्पेशियल लोकेशन पे हो गए. मैं फर्क करने आपको इस तरह से करें. आप एक पार्टिकल मूव करता हुआ और आप एक फ्रेम अटैच करते हो उस पार्टिकल पर, फर्क करें म्यू और डी. अब जब वो पार्टिकल क्रिएट हुआ म्यू वन, फर्क करें कि और पार्टिकल थे उनसे वो म्यू वन पार्टिकल क्रिएट, आप उस वक्त एक इवेंट रिकॉर्ड कर लें. अब आपका जो फ्रेम है वो उस पार्टिकल के साथ अटैच है, पार्टिकल मूव करता जा रहा है, आपका फ्रेम भी साथ साथ मूव करता जा रहा है. यहाँ पे आके वो पार्टिकल टिके हो. अब इस पार्टिकल के फ्रेम में अब दूसरा जो इवेंट हुआ है वो भी उसी जगह पे हुआ जहाँ पे पहला हुआ है. ठीक है. अब जो लैब का फ्रेम है, जो ये इस रूम का फ्रेम है, उसके अंदर पहला इवेंट वहाँ पे हुआ था, दूसरा इवेंट यहाँ पे हुआ. सो हमारे इस रूम के फ्रेम में ऐसा इम्प्रॉपर इवेंट. तो जो टाइम हम मेजर करेंगे इट विल बी डायलेटेड एज कंपेयर टू द टाइम मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर व्हिच इज सिटिंग ऑन द पॉइंट. अदर वे राउंड नहीं होगा कि आप जो टाइम आपने लैब में मेजर किया यहाँ से लेके पहले इवेंट वहाँ पे हुआ, फिर दूसरा इवेंट यहाँ पे हुआ. ठीक है. तो अब लैब के अंदर जो हमने टाइम मेजर किया ये उसको डायलेटेड नहीं लगेगा, बल्कि उसका हमें डायलेटेड लगेगा, क्योंकि हमारा जो टाइम इंटरवल है तो प्रॉपर नहीं है. ठीक है. सो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दोनों में लेंथ कंट्रैक्शन टाइम डायलेशन में ये है कि प्रॉपर लेंथ जो एक फ्रेम में है दूसरे में चूंकि वो इम्प्रॉपर होती है, इट गेट्स कंट्रैक्ट. और इसी तरह टाइम एक फ्रेम के अंदर, जिस फ्रेम के अंदर टाइम जो है वो प्रॉपर है, दूसरे के अंदर जिसमें वो इम्प्रॉपर टाइम है इट वुड बी डायलेटेड. और बाय द वे आपको ऐसी सिचुएशन हो कि ये जो फर्ज करें कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ एल प्राइम है इस फ्रेम में और लेंथ एल है इस फ्रेम में, ये इसमें भी मूव कर रहा है और इसमें भी मूव कर रहा है, देन हाउ आर द लेंथ्स रिलेटेड? फर्ज करें दिस इज मूविंग विद सम स्पीड v प्राइम and this is moving with some speed v. ना इसमें स्टेशनरी है ना, इसमें स्टेशनरी जी कैसे फ्रेम वे कैसे फ्रेम के जो आप अब इनका जो रिलेशन है वो इस तरह के फॉर्म सिंपल से ही आएगा, ना इससे आएगा ना उससे आएगा. देन यू फर्स्ट फाइंड हैव अनदर फ्रेम, क्योंकि फॉर एवरी these two for that there is another frame where the length is proper. So this L prime relates to some L naught 1 minus u1 square, so v prime square over c square, and then L is L naught 1 minus v square. क्योंकि अगर ये मूव कर रहा है इससे रिस्पेक्ट से विद स्पीड v, तो अगर आप एक फ्रेम इसके साथ ही अटैच करते हैं जिसकी अपनी स्पीड इसके रिस्पेक्ट से v है, उसके अंदर लेंथ L नॉट होगी, उस L नॉट को आप L से रिलेट कर दें और इसी तरह उसी L नॉट को जिस फ्रेम के अंदर L प्राइम से कर दें,
now you can find a relation of L and L prime, इसको इससे divide कर दें, you have a relation. So अगर दोनों move कर रहे हैं, then it's a ratio of these two factors जिससे ये length change होगी. और जो simple situation इसमें एक में ratio है, दूसरे में नहीं है, you have time dilation and length contraction, which are related parts. हमारे पास भी एक सिंपल जो चार्जेस है इस पे है कि नहीं एक में हाँ, इसमें तो हम सिंपल थे क्योंकि एक के अंदर वायर जो चार्ज डेंसिटी है वो रेस्ट में, सो यूज दिस सिंपल थिंग. लेकिन पॉइंट ये है कि मैं जब एग्जाम देख रहा था काफी लोगों ने उल्टा किया, कुछ ने कापा इधर मल्टीप्लाई किया, कुछ ने उधर किया. सो दिस शोड मी दैट पीपल आर कंफ्यूज्ड एज टू हाउ वर्ड्स लैक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट. मैंने जब अपलोड कर दी लोग ऑफिस में पढ़े आप लोग दे दीजिए और सेशन में आना शुरू कर दीजिए. एंड नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है तो आसान, काफी लोगों ने किया बट लेट मी स्टिल गो थ्रू इट क्योंकि मैं एक दो चीजें जो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. आप में से काफी लोगों ने कुछ ने सब जवाब सही भी लिख दिया है डायरेक्टली भी, which is also fine. If you know the lambda in this frame now, which is couple, आप डायरेक्टली भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, and you can transform the electric field from the prime frame to this frame using by using the conservation of flux as well. तो पहली बात ये है कि इस वायर का जो फील्ड है, जैसे this is the charge density lambda prime. Some charge. So this is E prime lambda prime over 2 pi epsilon naught. We call it some rho prime hat. Surprisingly, काफी सारे लोगों ने expression जब गलत लिखा हुआ है इवन राइट किया तो उसे वाला भी ये प्रॉब्लम Google to intend very simple feat. It means कि आप लोग Google पे कॉपी भी करते हैं तो समझते नहीं ये सब कुछ नहीं. इसमें जो rho prime है, this is the distance from this wire. So this is rho prime, and rho hat is the unit vector away from the wire. So essentially, अगर ये wire है तो electric field is out of this wire, like with the spikes that are going on in radial direction. So इसके अंदर जो फील्ड है, अगर आपने इसकी चार्ज डेंसिटी ट्रांसफर करनी है लैम्डा, यू कैन राइट डायरेक्टली E as lambda over 2 pi epsilon of rho hat, where again this is rho and this is now this lambda is unknown. You can express this lambda in terms of lambda prime. This lambda is k lambda prime, and now this rho is actually the same as rho prime, right? So similarly, because this is a transverse radial direction, so the length is unchanged. So this is the electric field, and since this is the electric field of in that frame, so this is just E prime. So E is kappa. Since kappa is 1 over u square over c square, and this factor is smaller than 1, so this is greater than 1. तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो यहाँ से यहाँ पे आपके हुए इंक्रीज होगी. इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं था, सिमिलरली इन दिस डायरेक्शन, तो इस फ्रेम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगी. दिस डेंसिटी ऑफ लाइन शोज द मैग्नीट्यूड of the electric field. So higher density means higher magnitude. That is it.
which makes sense because this length has contracted, and for the same charge, now the charge density has increased, which means the active field has increased. अब आपका काम इतना ही था, लेकिन just आप इस रिजल्ट को बाय द वे इस तरह से भी ड्राइव कर सकते हैं. If you imagine a Gaussian surface, S prime, A prime, and a Gaussian surface here. And apply the Gauss, simple the flux conservation. That on this side and on this side, it should be the same. You still end up with this, you come up with the same equation. Yeah, वो E transformation rules वो भी कुछ मान सकते हैं. E prime into E plus some combination of E. Related to C के लिए like E transform कैसे करते हैं लोग हैं. एक में हमें पता है. एक में definitely. तो वो So इसमें आप देखें कि ये जो एरिया है, the flux here and here cancel with each other or it is zero. और इस ये जो surface area है S है, if this is some length rho, so this surface area is 2 pi rho, this length into this length, let me call it some H prime, well H, and similarly here it is, and this is the rho component of the field, because this is the surface is directed along rho, the component of E dot A, so this is E rho, so 2 pi rho prime, if this length is radius is rho prime, and this length is some H prime, and you see that this is equal, this rho and rho prime are the same, because this is transverse length, and H is this length is contracted as compared to this thing, so H is H prime over copper, right? So u dot 1 minus u square बनेगा, H prime E rho prime, so H prime copper में चला गया, so E rho is copper, same as here. आपका मिड टर्म में प्रॉब्लम जो है वो यही तक था, that you have to find the electric field in this field. Just एक कमेंट के तौर पे हमने आपको अगर याद होगा कि हमने ये रिलेशन जो है वो डेवलप किए थे फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन के, that is Ex is E by kappa E by prime plus U bc prime and UC kappa E prime minus UB, और जो B है dx prime So just as a comment, अब देखिए इस फ्रेम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, देयर आर नो मूविंग चार्जेस. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर आप देखें तो एक तो उसका x कंपोनेंट है, और x कंपोनेंट क्या है इस फ्रेम के अंदर, Ex प्राइम जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली होगा, और इसका y कंपोनेंट भी होगा और z कंपोनेंट भी होगा. This is non-zero and this is non-zero, and B's are all zero. Explicitly, Bx 0, By 0, B 0.
और अब मैं इस तरह कहता हूँ कि बजाय इन जनरल ये पॉइंट लेने के, लेट मी अज्यूम दैट we are interested in a point in xy plane. In the prime system, and similarly here we are in the xy plane. This is lambda. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? Ex तो इसका 0 ही है, इसका E वाई प्राइम क्या होगा? जो भी E है वो असल में E वाई प्राइम ही होगा, लैम्डा प्राइम 2 बाय एप्सिलॉन नॉट रो प्राइम, और E प्राइम क्या है? 0 है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इसको इसका सब्जेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ भी फील्ड है, इधर इधर हर जगह पे फील्ड है, बट लेट्स जस्ट कंसंट्रेट इन दिस प्लेन। इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करें इस कोऑर्डिनेट के अंदर प्लेन फील्ड्स में, तो Ex क्या आ जाएगा? Ex इज 0, Ey क्या आ जाएगा? कापा Ey प्राइम, just रो प्राइम इक्वल टू सो कापा लैम्डा प्राइम, और Ez क्या आएगा? Ez प्राइम भी 0 है, By प्राइम भी 0 है, so this is 0, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? Bx 0 आ जाएगा, By क्या आएगा? By प्राइम 0 है और Ez प्राइम भी 0 है, this is also 0, और Bz क्या आएगा? Bz प्राइम 0 है लेकिन Ey प्राइम 0 नहीं है, so kappa u over c square Ey प्राइम। फिर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके तो इसको ट्रांसफॉर्म करें और इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो दैट्स आनी पॉसिबल। सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है व्हिच इज इन दिस डायरेक्शन, magnetic field का structure वही Z के अलावा, so magnetic field is coming out of the ball, so this is the magnetic, और situation क्या थी? ये वायर जो है it's moving this way in this frame, so this moving charge density is the electric current in this frame which is going like this, so we already know from electrostatics that we should expect a magnetic field at this point out of the hole. Similarly, if बाकी points को transform करें, then you will see that it's a magnetic field that's going on. मैं आपको homework में problem दूँगा जो cylindrical coordinates में इस problem को सही तरह से okay. सर मैं बेटे का मीन क्या था? जैसा मैं 3 सेक्शन बता रहा था, सब मीन में चलेगा तो BS samples और optics में स्पेशल है, यहाँ पूरा प्रोग्राम स्कूल जैसा तो टोटल मीन है, लेकिन roughly I think 55% होगा शायद। ये सब ठीक है। Okay, so क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो काफ़ी लोगों ने वो रिजल्ट तो नहीं निकाला जो मेरे जहन में था, बट इवन जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट सही लिखा है गिवन देम ऑल फुल मार्क्स ऑलमोस्ट। उसमें बेसिकली था कि यू कीप दी velocity the same in all frames and you change the you transform the components of the velocity according to velocity transformation। अब इन ज़्यादातर लोगों ने उसको ऑलमोस्ट ठीक ही अटेम्प्ट किया है। सो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अगर आप दोनों तरह से करें तो ऑलमोस्ट वही रिजल्ट आता है जो ब्रैडली का रिजल्ट है क्लासिकल से, एक कापा के फैक्टर से, अगर आप एंगल्स का डिफरेंस निकालें। ये मैंने कल ये सोल्यूशन अपलोड होगा वहाँ से देखिए। अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम, जो कि आई वाज सरप्राइज्ड कि काफ़ी लोगों ने
इसको गलत किया होगा ये आपको गिवन and you are supposed to transform it according to Lorentz transformation and Relativistic transformation. तो मेरा ख्याल है कि आपने न्यूटन लॉ के लिए क्लास में ट्रांसफॉर्म किया था जिसमें डेरिवेटिव ट्रांसफॉर्म किए थे और फिर एक आपने होमवर्क में भी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया you will be able to do it following the same step. This way we know that we have x prime, x kappa, x minus ut and t prime kappa. So y prime is y and z prime is z. So essentially आपने इन derivatives को convert करना था इस frame के अंदर. When you can write t as t prime when it goes from one form to another. So इसमें ये derivative है partial x. If I begin from let's say this thing, so अगर आपने इस frame में लेके जाना है, तो this is partial x prime, partial x prime to partial x plus t prime partial t prime to partial. So partial x prime with partial x is kappa, and partial t prime with partial x is minus kappa u over c square. Similarly, इसका डबल डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करें comes to be yeah. इसी तरह अगर आप पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल ये तो दोनों सेम रहेंगे ये पार्शियल y जो है ना y प्राइम से और z प्राइम से रिप्लेस होंगे so this thing is kappa square x prime. अब अगर इसको अब यहाँ पे पुट करें और ये y प्राइम y z प्राइम स्क्वायर कर दें तो देखें ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी ठीक है इसमें 1/c स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा -1/c इससे कैंसिल हो जाएगी और ये जो t प्राइम वाली स्क्वायर टर्म है एक यहाँ से आएगी एक यहाँ से आएगी और दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस आएगा ठीक है तो ये kappa स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1/c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से 1 और यहाँ से -u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर 1 - u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर kappa स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा we will get this same thing with t prime स्क्वायर सिमिलरली जो x वाली टर्म है इस टर्म में और इस टर्म में यहाँ पे u -1/c स्क्वायर इधर से आ जाएगा तो अब kappa स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो उससे 1 इससे -u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर तो kappa स्क्वायर into 1 minus u square और c square this is 1 so ये भी ट्रांसफॉर्म हो गए तो ये इक्वेशन बन गई so under Lorentz transformation the wave equation transforms in the same form the first principle of relativity अगर आप Galilean transformation लें that you begin here that x prime is kappa x there's no kappa sorry x minus ut and t prime is equal to t
then you see that it doesn't transform the way it should. There is जो result आता है इसमें Galilean transformation से it's strange इस तरह से आता है. तो ये अजीब सी फॉर्म आती है. इसमें सबसे ज़्यादा जो टर्म रिलेटिविटी का केस आ रही है. सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज नाउन around 1850s and 60s. And anybody who would have tried to do the Galilean transformation would have ended up with this thing and saw that the Galilean transformation doesn't hold. But it still took like 50 years to discard the Galilean transformation. Around 1890, 95, from that time, when Lorentz derived these transformations by requiring that Maxwell equations transform similarly from one frame to another frame, and he derived these transformations, and then of course Einstein had this postulate of constant speed of light. So anyway, this was the solution of the homework, and I hope that you are a bit wiser than before, because the wisdom doesn't come from listening to others, that's for sure. Wisdom comes from making mistakes and realizing the mistakes. गलतियाँ करने से भी wisdom नहीं आती, ठीक है? Wisdom उस वक्त आती है जब वो अपनी गलती को समझते हैं कि where you are wrong. Okay, so मैं आपको एक होमवर्क पे प्रॉब्लम दूंगा जिसमें you will be asked to find the field transformations in cylindrical coordinates, and then using those field transformations दोबारा से आपको ये जो प्रॉब्लम है वो दूंगा जिसमें you have a charge density stationary in one frame and moving in another frame, and you will be required to transform all the fields now, not only the electric but also the magnetic field. And you will see that the expression for magnetic field comes out nicely, and not only that, you will find the exact expression for magnetic field from this transformation and compare it with what we get from Bayes or Barrett. And that's a simple expression for magnetic field of a uniform straight line. Okay. Let's now come to the Maxwell equations. Delta E rho over epsilon naught. Delta E minus cos B cos T. Del E. Delta B. E of J plus epsilon naught. So we have now developed these Maxwell equations, starting with only Coulomb law, and we derived all of the relativity. Now the next part comes the solution of these equations. Now we can solve these equations directly for the fields, but that would be more difficult, and the rigorous solution requires going through some rectangles or diagonals. And then we get to what are called diagonal functions, etc. But we are not going to go to that road because we are interested only in fields of point charges in free space and how the field of free space interacts with point charges. So we will
be good enough with working just with some simpler quantities which we call potentials. And instead of working with the 6 unknowns, where the 3 unknowns or 3 components of magnetic field and 3 components of electric field, we will be working with essentially 4 unknowns, 1 scalar and 3 components of electric. So the problem would be a little bit simplified. And we can define those potentials from these source-free equations. Because this doesn't have any source, there is no current or charge density, and this doesn't have any source, there is no current or charge density. We can define the potentials using these 2 equations, and then we can find the equations to find those potentials from these 2 source equations, potentials from the charge and current density. The easiest thing to do is to begin with this equation, and we see that this del dot of a vector is 0, which means that we can define the magnetic field as a curl of some other vector function, because the divergence of curl of a vector is always 0. This is identically 0. This is a vector operator. So from this equation, we can express B in terms of another quantity, vector potential A, and if I use this thing in this equation, we come to this thing, partial T, del cross A, bring it here, and since del is the derivative over x and it's over time, you can interchange the derivatives that are commutated. So we have E plus partial A over partial T equals 0. Now this is an equation which says that curl of a vector is 0. And we can again use a property from vector calculus which says that if there is a quantity whose curl is 0, it means you can express that quantity as the gradient of some scalar function. And following the convention set by other people, instead of simply writing del phi, let me write minus del phi. So that other scalar function is minus phi, essentially. Which means that E is so we have the magnetic field and the electric field expressed in terms of a vector potential A and इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल फील्ड। और अब देखेंगे जो 6 अननोन है उसके बजाय हमारे पास सिर्फ 4 अननोन है, 3 कंपोनेंट्स A के और एक फाई इज स्केलर, सो देयर इज ओनली वन अननोन। ठीक है? नाउ what are phi and A? How to compute them? We substitute these expressions of E and B in these equations, and we can find equations for phi and A. So let me begin with this thing. So the first equation, del dot E, and instead of E we write del minus phi partial A and partial T. It should be equal to now epsilon naught. So let's multiply with minus sign and get del dot del is del square phi plus partial T del dot A minus the whole. This is one equation. The second equation we can get from here. Del cross A mu naught J plus here, and del cross A can be opened as del square A
mu naught j minus del phi, and there is minus partial square phi by partial e square. And let's write as multiply with negative sign, and let me write del square a here and bring that thing here, the last term. So I'm multiplying with minus sign, so this is minus plus minus minus plus minus plus and plus. So that becomes minus epsilon naught mu naught partial square a by partial t square minus mu naught j. तो इसको इधर ले आते हैं, and we have plus epsilon naught plus del epsilon naught mu naught partial phi by partial t plus del. ठीक है, इस टर्म को तो लेंगे तो ये जो डेल इसमें है और ये डेल इसमें है, ये मैंने कॉमन ले ली है, इधर से जो बाकी बच गया वो ये है और उधर से जो बाकी बच गया ये। mu naught j भी ऐड नहीं किया कैसे सोर्स भी है जी, करंट भी है ये करंट से हमने तो कहा था वो तो उसी इक्वेशन में नहीं है ना, ये जो दो इक्वेशन है इनमें तो नजर नहीं आ रही, मैं तो कभी सुन नहीं। These are equations with sources and these two are equations without sources. So this is one equation that we have. Now actually let's look at this equation. We can see that for several different A's we can get the same B. Why? Because I can always add a term in A which is the gradient of some scalar function, and I will still end up with the same thing because curl of that gradient of something would be 0. So it means that, as a side note, if B is del plus A, so B can also be written as A plus some del lambda, because del cross del lambda is 0. ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने वेक्टर कैलकुलस की यहाँ से ये इक्वेशन लिखी, फॉलो कर रही हैं? A जो है इज नॉट यूनिक फॉर द सेम B. So A has this flexibility in its classification, and we can exploit this fact to simplify our equation. We have one equation, and we have another equation, and we have an unknown A and unknown phi, and we have known current charge density rho and known current density J. And we have to solve them simultaneously because phi and A are intertwined in both equations. But we can convert them into two independent equations by exploiting this fact. Since we have liberty in choosing A, this is called fixing the gauge. So we can and equivalently this can be done by putting a condition on A, and this condition is put in several ways, and one of the ways is that let's take del dot A to be 0. This is one way. Simplest, we choose an A such that
its divergence is 0. Remember, this thing doesn't uniquely specify A. You still have Del cross del cross A which has to be found, but with this condition we can fix a gauge, we can fix the potential. Because potential is not unique, we can fix the potential like this. And this is by the way called Coulomb's gauge. Not because Coulomb invented it, but because it leads to the same form for phi, which is the Coulomb law. Because if del dot A is 0, this is del square phi equal to minus rho over epsilon naught. And अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो essentially you get this 1 over 4 pi epsilon naught rho r minus, which looks like the Coulomb's law, so that's why it's called Coulomb's gauge. But this gauge is actually, and once you solve this equation to find phi, you can put this phi over here. This is 0, and now the right side of this equation is known, and you can solve this equation to find A. So this is the root of Coulomb's gauge. But we are not going to be using this gauge. We will use another gauge, which is called Lorentz gauge. Which was indeed used by Lorentz, in which we put this condition on del dot A. The del dot A is equal to minus of this. So what does this do? This converts this equation into del square A minus because this factor goes away, del dot A is minus of this thing, and this equation becomes del dot A की जगह पे आ जाएगा minus epsilon naught mu naught partial square phi and partial t square minus rho over epsilon naught. And these are the equations. By the way, as far as magnetic field and electric field are concerned, it doesn't matter which gauge you choose. At the end, the fields will be the same. Potential will be different. अगर आप इस gauge के तहत potential compute करें, A5 दोनों different. इस gauge के तहत potential compute करें, इससे different होंगे, लेकिन field same है. अगर आप ये last दोनों equations को देखें, they are both wave equations. They have the same form. And not only that, in Cartesian coordinate system, the four equations actually have exactly the same form of solution. क्यों? क्योंकि Cartesian coordinate में ये तो single equation है ही, इसमें भी देखिए ये जो वेक्टर A है और J वेक्टर, इसको अगर आप कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें, तो x कंपोनेंट के लिए एक इक्वेशन बनेगी which will be del square ax minus all of this ax jx. Similarly, jy के लिए ay और jz के लिए az. और दूसरी चीज ये भी यहाँ से देख लें कि a की डायरेक्शन वही है जो j की डायरेक्शन है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. Any questions? Tomorrow I'm just going to ask you. Okay. Now actually begins. चलिए इनसे तो हमें पोटेंशियल्स मिलेंगे ना, तो हम उनके फिर कर्ल और ग्रेडियंट निकाल के बी और ई के निकालेंगे. जी जी, जो पोटेंशियल a और phi निकलेगा वो यहाँ भी पुट करें, a phi यहाँ भी पुट करें, a यहाँ पुट करें, b और b आते हैं. तो फील्ड्स क्योंकि डेरिवेटिव्स आसान होते हैं, and in principle we can almost always find derivatives, and at least in many more situations as compared to integrals. So क्वेश्चन के कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो गए, डेरिवेटिव्स तो निकाले जा सकते हैं. इसका एडवांटेज ये है कि we have simple equations to solve.
the simpler differential equation. ठीक है? Okay, अब जो है important part है वो ये है कि equation का solution. Because if you want to, let's say, compute the electromagnetic fields radiated by different charge particles, we need to solve the equations for potentials, and then we can compute the potentials for different charge and current distributions. And before I do that, can you ask a question? The Fourier transform आप लोगों ने पढ़ी थी? Yes. Good. Simply हमें को ज़्यादा complicated नहीं चाहिए. So if you are familiar with Fourier transform, then it's perfect. We'll actually solve it rigorously. You can find some approximate solutions in example, and also perhaps in this idiot book. But we'll solve it using Fourier transform, explicitly using the green function strategy. So what we are going to do is to solve these equations, and before that, let me introduce the concept of green functions. If you have a differential equation of like this, okay, something like this, y of x equal to some f of x. So this dx is a derivative operator. Some d by dx square plus d by dy, any derivative. So this is a linear. And this is the input or source or driving function of this equation. Example के तौर पे you can take this like d square y by dx square plus 2 dy by dx plus 3 is equal to sin x. So this is the input, and this is the differential equation with y as one. So इसमें अगर आप ये y common ले लें, so this is y, and all of that is the derivative operator. For these equations, you see, यहाँ पे सिर्फ x का लिखा है, it could be function of this del square minus epsilon naught mu partial t square phi. This is the operator, and this is the input. So if we have a situation like this, a differential equation to be solved like this, before we solve this equation, we can solve another equation where we replace the input function with some with the function delta of x. This is the Dirac delta function, and if we can solve this equation and find g of x, and I'll show later how to solve this. But for the moment, let's say we know the solution g of x of this equation, and we can see that we can write the solution y of x in terms of g of x, because I can express this thing like this, that then we multiply both sides with the f of x prime and integrate over x prime. इस इक्वेशन को दोनों तरफ हमने f of x prime से मल्टीप्लाई करके तो dx prime पे इंटीग्रेट कर. So this is the derivative over x, and this is the integral over x prime. So this can come out. So actually this should be function of x prime as well. And what is this thing? This is nothing but f of x, right? क्योंकि डेल्टा सिर्फ नॉन जीरो होता है उस वक्त जब इसकी आर्गुमेंट जीरो होती है, एट x इक्वल टू x प्राइम, और ये इंटीग्रल जो है ये आराम से वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ये नॉन जीरो सिर्फ एक पॉइंट पे है,
बाकी सब में ये 0 है. When this multiplies with this thing and we add up everything, since everything else is 0 except at one point, so we replace this x prime with x, so we get this. अब इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करें, you see that y of x is equal to this. The solution of this equation can be written as g of x, x prime, f of x prime, dx. So अगर ये green function g का पता हो, तो we can find the solution for any arbitrary input from this integral. So instead of solving this equation, all we need to do is solve for this equation. And then the general solution is written like this. अब ये जो है, this is in one dimension only. If this is a function of more than one variable, then simply this delta function becomes function of more than one variable, like delta of y minus y prime, delta of z minus z prime, delta of t minus t prime. अगर 3-dimensional time dependent input है, so these are 4 deltas, 1 in time and 3 in exponent. ये कैसे? We assume that the solution of this equation is part G. So इन दोनों इक्वेशन का कनेक्शन ये है कि दोनों का जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो सेम है. So it's essentially the same differential equation but with different input. अगर आपकी इनपुट जो है वो डेल्टा फंक्शन है, we call the solution the green function. तो सर्किट साइड का कोर्स भी आप लोग पढ़ते हैं, सर्किट्स का भी कोर्स पढ़ते हैं. So अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो यूजुअली इसमें सर्किट्स में ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू होता है, तो दे कॉल इट इंपल्स रिस्पांस. इंपल्स रिस्पांस का नाम आपने सुना? Because when you have a signal in time which is like a short spike, is called impulse, and since this is still a delta function, so circuits को solve करने के लिए usually the same technique is used, but instead of green function they call it impulse response. It's the same thing. So let's keep it for the next class. We will begin solving for the green functions. Any questions? So now we are transitioning from Elliott books to the Zangwill book. So this lecture and the next lecture, there are none of the books as it is. So you should probably keep notes on it. Absence is one about at the end.